गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट जो है उन्होंने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को रिलीज़ किया है, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है। अब प्रिपेयर की है फॉरेस्ट ऑफ इंडिया ने, रिलीज़ किया है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने। लेकिन हमें ये पहले पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है। तो फॉरेस्ट कवर जो होता है उसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की डेफिनेशन के हिसाब से ये माना जाता है कि जो भी 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड है और उसमें 10% से ज़्यादा की कैनोपी है, मतलब कि आपकी फॉरेस्ट की डेंसिटी है ट्री की, तो उसको हम फॉरेस्ट मानते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड लैंड हो, चाहे वो कोई प्राइवेट ओन्ड लैंड हो, कोई ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं, किस तरह का उसका लैंड यूज़ है उसका उससे कोई लेना देना नहीं। उस सब को हम फॉरेस्ट कवर में ही गिनते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है, वो होता है जो फॉरेस्ट है गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर, उस जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर फॉरेस्ट कैटेगराइज किया है जिस लैंड को, उसको और प्रिस्टीन फॉरेस्ट को हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मानते हैं। तो अब ये रिपोर्ट जो है उसमें हमको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है कि 24.62% जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है वो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर आता है। और जो अगर हम सिर्फ फॉरेस्ट कवर देखें तो इंडिया में 1540 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है। और फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है 2019 के कंपैरिजन के हिसाब से। अब ये रिपोर्ट हर 2 साल बाद आती है, तो आपको कंपैरिजन जो करना होगा वो 2021 वाली रिपोर्ट का 2019 से कंपैरिजन देखने को मिलेगा। तो 17 स्टेट्स या फिर यूटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। और इस रिपोर्ट की मेजर फाइंडिंग्स ये हैं कि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ देखने को मिला है वो आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तेलंगाना और उड़ीसा में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश जो है अभी भी लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर वाला एरिया वाइज स्टेट है। और मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहाँ पर आप सबको देखने को मिल रहा है कि 70% से ऊपर जो है वो आपका फॉरेस्ट कवर का एरिया है। ठीक है। अब टोटल मैंग्रोव कवर जो है उसमें उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है वो उड़ीसा में देखने को मिला है। टोटल कार्बन स्टॉक जो है वो हमारा 7204 बिलियन टन्स है, और उसमें भी इंक्रीज़ देखने को मिला है हमको। एनुअल इंक्रीज़ अगर हम बात करें तो वो 39.7 मिलियन टन्स देखने को मिला है। लेकिन एक अ, अच्छी खबर नहीं भी है, क्योंकि फॉरेस्ट कवर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है उसमें हमको गिरावट देखने को मिली है। अबाउट 1020 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो कम हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। उसमें सबसे ज़्यादा कम जो हुआ है वो मणिपुर में हुआ है। लार्जेस्ट और लॉस जो है फॉरेस्ट कवर का वो मणिपुर में हमको देखने को मिला है। अब क्या रीज़न है क्यों इस जो है फॉरेस्ट कवर का लॉस हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? उसका रीज़न जो है वो कहा जा रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, आपके जो है एग्रीकल्चर लैंड है उसको जो है वो जला देते हैं, दोबारा जो है उसको मतलब आपके जो क्रॉप उगाने से पहले उसकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की जाती है। उसकी वजह से जो है वहाँ पर जो है फॉरेस्ट कवर में लॉस देखने को मिल रहा है। अब ये रिपोर्ट जैसा मैंने आपको बताया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको रिलीज़ करता है, प्रिपेयर करता है, और जो है हर 2 साल में इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। और 2021 की रिपोर्ट जो है उसमें एक न्यू चैप्टर डाला गया है जिसके अंदर फॉरेस्ट कवर जो हमारे टाइगर रिजर्व्स, कॉरिडोर्स या फिर लायन कंजर्वेशन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी जो फॉरेस्ट कवर है उसको भी असेस किया गया है। फिर जो है एक और न्यू इनिशिएटिव शुरू किया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसी साल से 2021 से, जिसमें अबव ग्राउंड बायोमास जो है उसको भी कवर किया जा रहा है। और जो है एक और रिपोर्ट एफएसएआई ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस के साथ मिलकर जो है मैपिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन इंडियन फॉरेस्ट जो है एक और रिपोर्ट निकाली है इसी के अंदर। वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया नहीं निकाली है रिपोर्ट, इसी का पार्ट है वो। और उसमें डेकेड के हिसाब से जो है वो प्रोजेक्शन की गई है कि टेम्परेचर और रेनफॉल कैसा रहेगा। तो 2030 में कैसा हमारा रेनफॉल की प्रोजेक्शन क्या है या टेम्परेचर की प्रोजेक्शन क्या है 2050 में, 2085 में, ये सारी प्रोजेक्शन जो है उन्होंने इसी रिपोर्ट के अंदर जो है वो इसमें एक चैप्टर बनाकर एक स्टडी जो है वो पब्लिश करी है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है आर्काइव। तो अब ये आर्काइव लिखने में ये आर्कसिव है, लेकिन इसको जो है एक्स को आप ची पढ़ोगे तो आर्काइव पढ़ोगे, तो इसलिए आर्काइव इसको जो है वो नाम इसका आर्कसिव लग रहा होगा, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आर्काइव। ठीक है। तो ये एक ऐसी ऑनलाइन रिपोजिटरी है साइंटिफिक रिसर्च की जो 1989 में इसको स्टार्ट किया गया।
और कुछ थ्योरिस्ट थे, स्ट्रिंग थ्योरिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। जैसे 1991 में फिजिसिस्ट थे, उन्होंने अपने स्टाफ एक कलीग थे, उनकी जितनी ईमेल्स थी उन सबको आर्काइव कर दिया और उनको उसको जो है ऑटोमेट कर दिया। फिर उसमें धीरे धीरे और भी ईमेल्स जो हैं, अब जो साइंटिफिक कम्युनिटी के जो लोग हैं आपस में जो डेटा शेयर करते थे उसको उन्होंने एक तरह से ऑनलाइन कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। तो आज तक इसमें ऐसे 5 लाख पेपर जो हैं वो सबमिट किए जा चुके थे 2008 तक। अब ये न्यूज़ में कब आया? न्यूज़ में कब आया, क्योंकि 2014 के बाद जो है 1 मिलियन और उसके बाद डबल होता ही रहा है, डबल होते ही रहे हैं इसके अंदर जो रिसर्च पेपर आ रहे हैं। अब ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि कोविड के टाइम पर बहुत से जो हैं आपके लाइफ साइंसेस के ऊपर जो है आपके रिसर्च पेपर्स जो हैं वो इसमें जो सबमिट किए थे उसकी हेल्प ली गई है। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि कोई भी जो है रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड नहीं है, ठीक है? तो आपके रिसर्च पेपर जो भी होते हैं, किसी समझ लो आप किसी साइंस मैगजीन में छपते हैं, तो वो पीयर रिव्यू किए जाते हैं कि हाँ, जो ये क्लेम किया जा रहा है साइंटिफिक क्लेम, ये सही है या नहीं है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर तो क्या है, आपकी कम्युनिकेशन, मैंने किसी भी साइंटिस्ट ने अपना जो है रिसर्च पेपर जो है वो इसके अंदर डाल दिया, एक तरह से समझ लो, एक तरह से ये ड्राइव है आपकी, इसमें डाल दिया और इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन इसको पीयर रिव्यू नहीं किया है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत ज़्यादा रिच रिसोर्सेज इस आर्काइव के अंदर डाले गए हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एडटेक। तो इंडिया का जो है एडटेक जो है आपका स्ट्रीम जो है वो बहुत डेवलप हो रहा है। एडटेक क्या होता है? एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो आपकी जो जितनी भी एडटेक कंपनीज हैं वो बहुत डेवलप हो रही हैं, खासकर कोविड के टाइम पर। तो उसमें धांधलेबाजी भी बहुत हो रही है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है। तो उससे पहले जो एडटेक कंपनीज हैं उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन की तरफ जो है वो एक स्टेप बढ़ाया है और उन्होंने इंडिया एडटेक कंसोर्टियम बना लिया है, ठीक है? और उसके लिए इसी इंडिया एडटेक कंसोर्टियम ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जो एडटेक कंपनीज को फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अब एग्जैक्टली एडटेक क्या होता है? तो एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है? इस दोनों को कंबाइन कर दिया तो आपका ये शब्द बन गया एडटेक। इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज़ करते हुए हम अच्छी एजुकेशन एनहांस करके दें, ठीक है? जैसे अभी आप जो पढ़ रहे हो हमसे, आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, हमारी जो आप कोर्सेज परचेज करते हो, वो भी एक एडटेक का ही पार्ट है, वो भी हमारी भी कंपनी एक तरह से एडटेक ही है, ठीक है? तो अब जो है हुआ क्या कि कोविड के सिचुएशन में, कोविड से पहले इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था एडटेक, ऑफ कोर्स इट वाज ग्रोइंग, बट कोविड ने जो है वो एक तरह से इस एडटेक को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। बहुत बड़े बड़े जो है इंडियन एडटेक स्टार्टअप्स जो हैं वो $1 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन पे पहुंच गए हैं। तो अब हुआ क्या कि बहुत धांधलेबाजी होती है एडटेक की जो है बिजनेस में, आपको झूठे जो है वो रिजल्ट दिखाए जाते हैं, बिजनेस माल प्रैक्टिसेस हैं आपको कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और स्टूडेंट्स और गार्डियंस को बहुत ज़्यादा जो है वो झूठे कोर्सेज बेचे जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं आपको जो है वो ल्योर करके एक परमानेंटली आपको लोन पे डाल दिया जाता है या आपको फ्री सर्विसेज बोलकर पेड सर्विसेज बेची जाती हैं। तो ये सब को रोकने के लिए जो है सेल्फ रेगुलेशन के लिए की ज़रूरत थी, ठीक है? तो अब जो है गवर्नमेंट ने पहले ही अभी कुछ दिन पहले गाइडलाइंस भी इशू की थी कि जो है गार्डियंस और स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज को साइन अप ना करें जिसके बारे में उन्हें नहीं पता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बाद में उनसे उसको परचेज करने की जो है वो पुश किया जाएगा, ठीक है? फिर उन्होंने बोला कि बिजनेस माल प्रैक्टिसेस जो हैं उससे फाइट करने के लिए जो है वो स्टूडेंट्स और गार्डियंस को जो है वो अपने आप को एक तरह से अवेयर करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आपको ऐसे लोन से बचना होगा जो ये कंपनीज, एडटेक कंपनीज आपको किसी ना किसी तरीके से कोर्स के अंदर ही ये आपको बेचने की कोशिश करेंगी, ठीक है? तो अब हुआ क्या, अब ये क्योंकि गवर्नमेंट ने, अब एजुकेशन मिनिस्टर ने जो है वो बोला कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस प्रिपेयर कर रही है कि कैसे इस एडटेक इकोसिस्टम को रेगुलेट किया जाएगा। तब ये एडटेक कंपनीज जाग गई और इन्हें लगा कि सेल्फ रेगुलेशन जो है वो एक हमको तरीका अपनाना चाहिए, और वरना गवर्नमेंट का जो है रेगुलेशंस हमारे ऊपर आएंगे, उससे पहले हम सेल्फ रेगुलेशन पे चले जाते हैं। तो अब ये सेल्फ रेगुलेशन में कुछ जो है 3 पेज का कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने अपने लिए इशू किया और बोला है कि ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे हम, मिसलीडिंग एड्स नहीं जो है वो डालेंगे। और जैसे आपको हमारे आपके यूपीएससी के बिजनेस में भी होता है कि बच्चों जो होते हैं जो एडटेक कंपनीज होती हैं ये क्लेम करती हैं कि हमारी ऐसी परफॉर्मेंस रही है, हमारे स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा सक्सेस क्लेम कर चुके हैं। तो ये सारी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से बचने के लिए इस जो है कोड ऑफ कंडक्ट में बोला गया है। फिर जो है
उन्होंने बोला है कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो कोड्स एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हैं उसको भी हम फॉलो करेंगे। फिर रिफंड और कैंसिलेशन की जो आपकी पॉलिसीज़ हैं एडटेक कंपनीज, उन्होंने बोला है कि हम प्रोमिनेंटली उसको शो करेंगे ताकि जो है बच्चों को या फिर गार्डियंस को प्रॉब्लम ना हो, उनको पता हो कि फ्यूचर में उनको रिफंड कैसे मिलेगा या कैंसिल कैसे कर सकते हैं वो अपने प्रोग्राम्स को। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है बार्क। तो बार्क जो है आपका ब्रॉडकास्ट और ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बोला है कि आप न्यूज़ रेटिंग्स जो है वो रिलीज़ करो विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तो ये बार्क जो है आपकी एक इंडस्ट्री बॉडी है जो कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स और एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया एजेंसीज ने मिलकर बनाई है 2010 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स, इसके ऊपर बहुत आपको पता होगा टीआरपी स्कैम, ये सब पता नहीं कौन कौन से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे पहले, तो इसीलिए ये बहुत रिफॉर्म किया जा रहा है इस बार्क को, इसके प्रोसेसेस को, इसकी ओवरसाइट मैकेनिज्म को, इसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, इसलिए रिफॉर्म किया जा रहा है। इसमें इवन इंडिपेंडेंट मेंबर्स को भी डाला गया है ताकि इसकी फंक्शनिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर अब इसमें गवर्नमेंट ने बोला है इनको, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, कि आप पिछले 3 महीने की जो है न्यूज़ रेटिंग्स की जो है वो रिलीज़ करो और ट्रू ट्रेंड्स आपने बताने हैं। फिर आगे से उन्होंने बोला है कि आपको हर 4 हफ्ते का जो है वो डेटा देना है कि न्यूज़ और इस जॉनर में जो भी चैनल्स आते हैं उनका क्या एक तरह से टीआरपी रहा है, तो उनको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक वर्किंग ग्रुप की इवन जो है एक कमेटी भी बना दी है प्रसार भारती सीईओ के अंडर, और वो बताएंगे कि क्या मेथड अपनाया जाएगा टीआरपी को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है गगनयान मिशन। तो इसरो ने रिसेंटली क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका क्वालिफिकेशन टेस्ट किया है 720 सेकंड्स के लिए, और वो इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में उसका टेस्ट किया गया। ठीक है, वो सक्सेसफुल रहा है टेस्ट। तो अब गगनयान मिशन इज़ ऑन जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। ऑफ कोर्स इसका शेड्यूल तो 2022 में लॉन्च करने का था, बट हो सकता है कि गगनयान मिशन थोड़ा सा डिले हो जाए बिकॉज कोविड के टाइम पर इस पे थोड़ी सी जो है वो प्रोग्रेस में थोड़ी सा डिले आया था। ठीक है, तो गगनयान मिशन 10,000 करोड़ का इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। 2022 में इसको लॉन्च करने के लिए पीएम मोदी ने अनाउंस किया था, और 3 से 7 क्रू मेंबर्स जो है वो 3 से 7 दिन स्पेस में गुजारेंगे 400 किलोमीटर ऑर्बिट पर। GSLV का MK3 जो है वो उसके थ्रू जो है ये गगनयान लॉन्च किया जाएगा, और 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है 3 GSLV MK3, वो उसी का यूज़ किया जाएगा, और 3 इसमें जो है वो अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी इस मिशन में पूरे में। ठीक है, तो अब इसमें जो इन स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग जो थी वो रशिया में हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स की कराई गई है, और वो लास्ट ईयर कराई गई थी, 2020 में रादर कराई गई थी, और वो वापस आ गए हैं, और ये गगनयान मिशन को आने वाले टाइम में लॉन्च किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो उन्होंने एक MOU साइन किया है इग्नू के साथ, ताकि ज्ञान दर्शन चैनल पर इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चलाया जा सके। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि जो आपके एक्सपर्ट्स हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, जैसे कि CA हैं, CS हैं, या फिर जो आपके ऑफिशियल्स फ्रॉम IEPFA हैं, ये कंडक्ट करेंगे 75 एपिसोड्स के ऐसे लाइव टेली लेक्चरिंग सीरीज प्रोग्राम्स जो कि आपके ज्ञान दर्शन चैनल पर ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। अब IEPFA क्या है? आपका इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है। सेक्शन 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है ताकि इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस जनरेट की जा सके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is State of the Forest Report 2021. So Union Minister of Environment has released this India State of Forest Report 2021, which has been prepared by Forest Survey of India. So before we look at the report, we have to see what is a forest cover. So according to the definition of Forest Survey of India, forest cover constitutes all land which is more than 1 hectare, which is of 1 hectare or more, and it has canopy density of more than 10%. So irrespective of land use or irrespective of legal ownership, that area is called forest cover. Okay, but recorded forest area is only that area which is recorded as forest in the government records as well as the pristine forest. All these two areas are called recorded forest area. Okay, so as per the report, 24.62% of the geographical area of the country is under the forest and tree cover, and we have
if we compare it with the last report which was released in 2019, because this report is released once in 2 years, that is biennial. So every comparison we will be making it will be uh, every comparison will be done with the report of 2019. So if we compare it with the 2019 report, we have seen an increase of 2261 square kilometer in total forest and tree cover in the country. And if we only see at the forest cover statistics, then we have observed a 1450 square kilometer of increase in the forest cover. 17 states and UTs are those who have about 33% of geographical area under forest cover. So what are the major findings of this report? So we, like I was telling you, we have seen increase in forest cover. Andhra Pradesh is the topmost state in which the forest cover increase has been the maximum. Of course, Madhya Pradesh still remains the largest the state with the largest forest cover in the country. But northeastern in terms of forest cover as percentage of total geographical area, the top five states are these northeastern states: Mizoram, Arunachal, Meghalaya, Manipur, and Nagaland. So 17 states and UTs have about more than 33% of the geographical area under forest cover. So total mangrove cover area has seen increase, and the maximum increase has been observed at Odisha. So also the total carbon stock has also increased in the country. The annual increase in the carbon stock is about 39.7 million tons if we compare it with 2019. So there is also bad news in terms of Northeast India. We have lost about 1020 square kilometers of forest in Northeast India during this period 2019 and 21. And Manipur has recorded the largest loss in forest cover. So the loss can be attributed to the practice of shifting cultivation, which is still being practiced in northeastern states. Okay, so about this report, like I was telling you, it is released biannually by the Forest Survey of India. And in this year, the 2021 report, it has a new chapter which which has also assessed the forest cover in the tiger reserves, corridors, and lion conservation areas of the country. And a new initiative of FSAI is also there, where a chapter has been released in which above ground biomass has been estimated, and another chapter by FSAI is basically a study which is conducted by FSAI with BITS Pilani Goa campus, and it is about mapping of climate change hotspots in the Indian forests. So it has the objective of mapping the climate hotspots over the forest cover in the country, and it has given some projections for the future too, about the temperature and rainfall data. So three future time periods have been taken, that is the year 2030 and 2050, 2030, 2050, and 2085. So these time periods have been taken, and projections have been made about these hotspots, and how the temperature and rainfall will fare over these climatic hotspots. Okay, so now let us see the next topic, which is archive. So you may be seeing that this is ARXIV, arxiv, but X is being pronounced here as key. So this is archive. So this archive is basically an online repository of research, scientific research, which started in the year 1989, and it is in the news recently because several research papers, of course they are not peer reviewed, but these several research papers have helped scientific community across the world while dealing with the COVID situation. And several scientific papers were made available by archive free of cost to the scientific community as well as to the common people. So this archive started out in 1989 as an email list. So a physicist, Paul Ginsburg, in 1991 started compiling or automating his colleague John Cohn's email list, uh, and it started out to be a repository of scientific research. And later on 5 lakh papers had been submitted by into this archive by 2008, and it took only just 6 years for this number to double to a million, and after 7 more years this number doubled to 2 million now.
Okay, so it has been very helpful because these research papers are available free of cost to the scientific community in the world. And there is just one concern, that these papers are not peer reviewed. Okay, because it is like just your email threads that have been shared with the scientific researchers with each other. So they are not peer reviewed, but they are good resources and they have proved to be good resources while dealing with the pandemic at the global level. Okay, so now let us see the next topic, which is edtech. So the edtech ecosystem in India is growing, and malpractices related to this ecosystem has also been growing. That's why the government has, before the government could come up with regulations, the edtech companies have formed a consortium, this India EdTech consortium, and they have issued some self-regulation guidelines for themselves. So what exactly is EdTech? So it is an amalgamation of two words, education and technology. So it means using technological tools to improve learning outcomes and enhancing access. So the best example is, of course, our own institute. We are also an EdTech company. We are providing you lessons online. You purchase courses from us. There are paid courses, there are free courses. But of course, there are malpractices in edtech companies also. You are misled into a false belief that this is the result of our institute, or this could be your performance. So you have to be vigilant. Companies, there are malpractices, but that's why the government has released some guidelines also for the students and guardians to see how they can remain vigilant and how they can remain aware as to avoid any situation of being fallen into the malpractices. Okay, so this edtech grew during the COVID-19 shutdown, and it became a new normal for us. So because of growing malpractices, there was a need for issuing guidelines. So that's why the government issued these guidelines of do's and don'ts for students and guardians who were looking to sign up for online courses. So now there were several malpractices, like parents were lured into a false belief that their wards will be able to secure that this much rank or this much score in school. So that's why the government had to come up with an idea that these edtech companies had to be regulated. Of course, the edtech sector is also increasing leaps and bounds. Over like there is a figure here, 4 out of the 6 Indian edtech startup companies are worth $1 billion and above. So that's why certain guidelines or self-regulation guidelines have been issued by these edtech companies. So it's a 3-page code of conduct, which is stressing upon transparency and warning against misleading ads. So like that these institutes or these edtech companies claim that they have this much uh, shining example of students who have secured this rank or this much score. So they are saying that misleading ad should not be there. Every advertisement of a successful candidate must be substantiated with a proof, and it also should be it should also carry the product or service that the particular successful candidate had used. So these are certain guidelines, and there is one more, like this refund and cancellation policy. So it must be displayed prominently so that student or the guardian can make up their mind before they subscribe to any online course. So these are the guidelines which must be adhered by these edtech companies, and these are the self regulation guidelines. But of course, the government has planned, the education minister even clarified that the government is in the process of releasing the guidelines, and they will be issued after a few weeks. Okay, so now let us see the next topic, which is bark. So Ministry of Information and Broadcasting has asked Broadcast and Audience Research Council, which is a joint industry body founded by several broadcasting associations, and the ministry has asked this bark to release news ratings with immediate effect. So that bark has been marred with controversies. The most famous one was the recent one where the TRP was manipulated for certain channels, and now reforms have started in this particular body, like in
in their process or protocols, or how oversight would be made upon this council. Even in the governance structure, like independent members have been inducted into BARC. A permanent oversight committee has also been formed. So on that ground, even the government has now asked that these BARC should release the last 3 months rating of news channels, and there should be fair and equitable representation of true trends. And it has also said that the ratings of the news channels and other genre must be released on a 4 week basis. And it even has formulated a working group committee under the chairmanship of Prasar Bharati CEO, so as to formulate how this TRP must be calculated. Okay. So now let us see the next topic, which is Gaganyaan mission. So recently ISRO has tested the cryogenic engine for Gaganyaan program, and it has successfully tested it for a duration of 720 seconds at ISRO's propulsion complex in Tamil Nadu. So this has been a successful test. So this Gaganyaan mission is 10,000 crore Indian human space flight mission, which is scheduled for 2022. It is designed to have 3 to 7 crew members, which will be spending 3 to 7 days in space in a 400-kilometer orbit. So GSLV Mk3 will be used to launch this Gaganyaan. There will be 2 unmanned flights, which will of course be carrying the equipment which will be necessary for this mission, and 1 human space flight. Okay, so the 4 astronaut candidates have also undergone training in Russia for this Gaganyaan mission. Of course, this Gaganyaan mission is scheduled for 2022, but there has been some delays due to the pandemic. And of course, if all goes out well, then we will have this mission. But if there will be some issues, then this mission can be delayed also. Okay, so now let us see the next topic, which is IEPFA. This Investor Education and Protection Fund Authority has signed an MOU with Indira Gandhi National Open University for making 75 episodes for investor education and financial literacy. Okay, so this series of program will carry experts from professional institutions like CA, CS, and other senior officials from IEPFA, and they will be conducting live tele lecturing series on the Gyan Darshan TV channel. So about this IEPFA, this is an Investor Education and Protection Fund Authority, which was established under the Section 125 of Companies Act. So it aims to promote investor education, awareness, and protection, and it falls under the administrative control of Ministry of Corporate Affairs. Okay, so these were our topics for today, and we have shared the weekly compilation for this of these current affairs also. So download it from our Telegram group. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.